quickly shift to our discussion number 2, and that has to do with Rajya Sabha. You see, in the Rajya Sabha now, the NDA is the biggest bloc. Does this mean ease of doing business for the government? Now, why do we say this? Let's quickly take a look at the presentation on your screen right now. So, as far as the BJP is concerned, this is how the Rajya Sabha at this moment looks like. So, in Rajya Sabha, you've got the BJP, which is at 104, the Congress at 27, TMC at 13, and these are all parties who sit in opposition. According to this strength, the current strength of 237, the halfway mark is around 117. And with BJP at 104, and many of its alliance partners, for instance, you join the JDU, then you've got other players who tend to abstain or not vote. And the moment they do that, the strength of the house comes down. So there is a natural advantage to the Bharatiya Janata Party whenever that happens. So the big question over here, the big question on your screen right now, is that now that the NDA is the biggest bloc in Rajya Sabha, does this mean that the government wants to, propagate and promote ease of doing business? But in parliamentary business, will this mean ease of doing business for government very, very clearly? And also, another more important thing is that, see, they have a majority in Lok Sabha. Now they are the biggest bloc in Rajya Sabha, by far the biggest. Does this mean that we run a risk of the government steamrolling legislation, railroading legislation? Let's put that to a discussion. Satish Chandra Dubey, Rajya Sabha MP of the BJP, as well as Dr. Amiben Yagnik, also a Rajya Sabha MP of the Congress Party. The Rajya Sabha debate on the channel. Mr. Dubey, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं और मेरा पहला सवाल यही है, आपको नहीं लगता है कि ये पिछले 7-8 साल का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने देखे हैं कि कई कानून सरकार ने बिल्कुल एकदम चटपट लेकर के आ गए. You did not wait for debate, discussion, और बहुत जल्दी अफरा तफरी में आपने you managed, floor strategy was such that you managed to get the laws passed. आपको लगता है कि ये भले ही आप अब सबसे बड़े दल हो गए हैं राज्यसभा में, लेकिन ये आलोचना अब और तेज हो जाएगी कि आप अभी बिल्कुल मतलब एकदम ना कोई चर्चा ना कुछ, सीधा अपना आप लेजिस्लेशन पास कर लेंगे? देखिए, ऐसा है कि आलोचना तो एक पार्ट होता है राजनीति का. जब अच्छा आप काम करेंगे तब भी आलोचना होगा, काम में कोई त्रुटि होगी तब भी आलोचना होगा. आलोचना तो सत्ता में रहने के बाद झेलना ही पड़ता है, और खास करके इस समय जो दौर चल रहा है, आप अच्छा काम करिए तब भी धरना प्रदर्शन या आलोचना करना इन लोगों की अहम भूमिका बन गई है. उसी का नतीजा है कि जहां देखिए वहां कांग्रेस साफ हो रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है. उसी का नतीजा है. ये लोग जितना चर्चा करे, विपक्ष उसको गलत ढंग से प्रवेश करे, उसका नतीजा उसको मिलता ही है. जी, Amiben Yagnik, I want to come to you now. Do you think a lot of this has to do with very little opposition unity, and particularly within the Congress party? Because if you look at what has happened in the Congress's Kerala unit, you've chosen J.B. Mathur, and Mathur was chosen after a tussle in the Congress ranks over picking a candidate. So do you feel at a time when the NDA is getting stronger and stronger in the Rajya Sabha also, a more united Congress and a more united opposition could have done the trick? Well, I may not go into the specifics you mentioned, but the opposition is doing its duty well. Even the other Congress party and the other parties who are in opposition, every one of us in the Rajya Sabha is raising a voice to be heard, to see that the parliament is a place where there is deliberation, debates, discussion, so that a legislation pass the test, the touchstone of absolute legislativeness and comes out as a good law.
But as you have seen, whether it was the NDA bloc bigger or smaller, even if it was not bigger, the bills were bulldozed. You know, if you see, there have been almost about 20 bills passed in a day, in a short time, and we have been shouting what's in the your web fear? and Do you asking feel that the this is honorable only going to chairperson that we may increase? be heard. So the With an ever stronger NDA now, do you think that it this has is going to become- be increased? The bulldozing of bills. No, well, if you think that they were not doing it earlier when it was not a bigger block, that same thing happened because the voices are not heard. We are not allowed to say. We don't follow the procedures which are in the Rajya Sabha, and that you have seen what has happened to the farm laws, and the MPs were suspended. They have been out for the whole session, and no fair hearing was given to them. Or what happened? We lost, and then finally, without even discussion, the farm laws were repealed at the behest of the दुबे जी, आप government. कैसे जवाब So देंगे? this kind of यही मेरा सवाल यही attitude, था I think, whether कि the इससे block पहले- is smaller or bigger. दुबे जी, ये मेरा सवाल आपसे यही था कि इससे पहले जब आपके नंबर इतने नहीं थे जितने अब हैं, तब भी आप पर आरोप ये लगता था कि आप एकदम बिल्कुल सब कुछ ठेल दे रहे हैं या यू आर रेल रोडिंग लेजिस्लेशन। देखिए अब तो अब आप देख लीजिए, अब आप और आरोप लगेगा। देश हित में, राष्ट्र हित में कोई भी कानून लाना है तो विपक्ष का भूमिका ही है विरोध करना। तो विपक्ष अपना भूमिका निभाएगा, और जिसको इस राष्ट्र से लगाव होगा, राष्ट्र से मोहब्बत होगा, वो हम लोग के बिल को कहीं न किसी न ढंग से समर्थन करेगा ही करेगा। नहीं दुबे जी, मतलब आप कोई भी बिल लाएंगे और उस पर अगर लोग विपक्ष सवाल उठाए तो इसको आपने राष्ट्र प्रेम से क्यों जोड़ दिया? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अब जो भी देश चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए विधेयक तो लाना ही पड़ेगा, और जो इस समय वर्तमान में राष्ट्र हित में जो होगा उसको, उस कानून को तो पास करना ही पड़ेगा। दुबे जी, एक सेकेंड, अगर विधेयक और कानून दो अलग अलग चीजें होती हैं। करेगा डायरेक्ट, A law in parliament तो नहीं करेगा, and an ordinance are two totally different things. ऑर्डिनेंस, विधेयक जो है वो एक इमरजेंसी मेजर है, और सरकार पर आरोप यही लगता है कि आप उसको यू यूज इट एज अ टूल, कि बहस ना करानी पड़े तो विधेयक ले आओ। ऐसा नहीं है कि बहस नहीं होती है, बहस तो होता है, लेकिन अब विपक्ष का काम है हर मुद्दा पे घेरता है विपक्ष। ठीक है। थैंक यू वेरी मच आमी बेन याग्निक एज वेल एज सतीश चंद दुबे फॉर ज्वाइनिंग अस।